Good morning, students. Myself Pooja from Divine Kids School, Balotra. Science, class 6th. ओके स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 99 से 10.5 करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ. इन आवर डेली लाइफ वी यूज वेरियस टाइप ऑफ मेजरिंग डिवाइस. वी यूज अ मीटर scale. Meter scale for measuring. Meter scale for measuring length. A tailor use a tape, whereas a cloth merchant use a meter rod. For measuring a length of an object, you must close a suitable device. You can measure the width of trees or the size of chest using a meter scale. For intense measuring, tape is more suitable for this. For a small measurement such as a length of your pencil, you can use a 15 centimeter scale of your geometry box. In taking measurement of length, we need take care of a following. Place a scale of a contact with the object along a length as shown in figure 10.7. जैसे फिगर 10.7 के अंदर आपको क्या दे रखा है कि ये जो फॉर्म है वो कैसी है, करेक्ट, और ये रॉन्ग है. रॉन्ग क्यों है? क्योंकि ये इसको तिरछा रखा है, तो ये जो इसकी मेजरमेंट आएगी वो ये 13 से ज़्यादा आएगी और इसकी एग्जैक्ट 13 आएगी, इसलिए ये कैसा हो गया, राइट. ओके, तो इन सम स्केल एंड मे बी ब्रोकन, you may not be able to see zero mark clearly. In such case, you should avoid taking measurement for the zero mark of the scale. You can use any other full mark of the scale, say 1 centimeter. Then you must subtract the reading of this mark from the reading at the other end. For example, in figure 10.8, the reading at one end is 1 centimeter, okay, and at other end it is 14.3 centimeter. Therefore, the length of object 14.3 minus 1 centimeter is equal to 13.3. कि एक एंड जिसमें ज़ीरो कटा हुआ है, तो अगर हम ज़ीरो से मतलब एक से मेज़रमेंट करते हैं तो उसमें ज़ीरो को माइनस कर देते हैं और हमारा जो एक्चुअल मेज़रमेंट है वो हमें मिल जाता है. Number 3, correct position of eye is also important for taking measurement. For your must be exactly in front of point where the measurement is to be taken, show in figure 10.9. Position B is a correct position of the eye. Note the from position B the reading 7.5 centimeter. From position A and B is reading मे बी डिफरेंट. जैसे कि आपको ये फिगर में दिख रखा है 10.9 में, इसमें सेंटर वाले को तो प्रॉपर दिखेगा लेकिन साइड वाले की जो डिस्टेंस होगी वो ज़्यादा होगी. ओके, नाउ एक्टिविटी 3, मेजर द हाइट ऑफ योर क्लासमेट यूजिंग हैंड स्पैम. दे यूजिंग अ मीटर स्केल फॉर दिस. आस्क योर क्लासमेट टू stand with his back against a wall. Make a mark on the wall as exactly his head. Now measure the distance from the floor to this mark on the wall with your hand span and then with a meter scale. Let all the substance measure this length in similar way. Record all observation in table 10.3. आपको क्या करना है, टेबल 10.3 के अंदर ये आपको इसको फिलअप करना है. इसमें क्या करना है, हु मेजर्ड द हाइट, और इसमें हैंड स्पैम की हाइट लिखनी है और हैंड स्पैम के थ्रू हाइट लिखनी है, और इसमें क्या करनी है, इन सेंटीमीटर में इसकी हाइट लिखनी है. स्टडी केयरफुली रिजल्ट ऑब्टेन बाय अ डिफरेंट स्टूडेंट. द रिजल्ट इन अ कॉलम टू मे बी अ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एज द लेंथ ऑफ अ हैंड स्पैम मे बी डिफरेंट फॉर अ डिफरेंट स्टूडेंट. Look at the result in a column 3. Where the measurement are done using a standard scale, the result may be close to each other now. But are they exactly equal? If not, why do you think there is a difference? After all, everybody is using the same scale and not different hand span. This could be due to a small error in taking observation. In higher classes, we will learn about the importance of the
of knowing the handling such error in measurement. Now next है 10.6 measurement the length of a curved line. We cannot measure the length of the curved line directly by using a meter scale. कि मीटर स्केल से सीधा हम डायरेक्टली मीटर को कर्व्ड लाइन अगर लेंथ है हमारे पास में तो हम उसको मेज़र नहीं कर सकते. हमें उसके लिए हमें एक थ्रेड की ज़रूरत पड़ती है. वी कैन यूज़ thread to measure the length of curved line. Now activity 4. Use a thread to measure the length of the curved line A and B. Figure 10.10. Put note on a thread near one of end. Place this note on point A. Now place the small portion of a thread along the line, keeping it tough using your fingers and thumb. Hold the thread at this point with one hand. Using the other hand, stretch a little more portion of the thread along the curved line. Go on repetition this process till the other end B of the curved line is reached. Make a mark on the thread where it touches the end B. Thus stretch the thread along a meter scale. Measure the length between the note in the beginning and the final mark on the thread. This given length of the curved line AB और इस कर्व्ड लाइन के थ्रू आप AB की जो मेजरमेंट है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. We see that we need a lot care ensure that we are measuring distance and lengths correctly, and we need some standard unit and device with which we measure these distance and can convey our result to other. 10.7 Moving things around us. Think of some object you have seen recently them in a table. 10.4 These may include a school bag, a mosquito, a table, people sitting on chair, or a people moving about. The list may also have a butterfly, a dog, a cow, your hand, a small baby, a fish in water, a house, a factory, a piece of stone, a horse, a ball, a bat, a moving train, a sewing machine, a wall clock, or hand of a clock. Make your list as large as you can. विच ऑफ दीज आर मूविंग कि इन सब में आपको क्या करना है, इसकी लिस्ट बनानी है. जैसे ये यहाँ पे बताना है कि ये रेस्ट में कौन से हैं और ये मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट कौन से हैं. जैसे हाउस जो है वो कैसा है, रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और अ फ्लाइंग बर्ड जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट है. ओके, तो मेक योर लिस्ट और लार्ज एज यू कैन. अगर आप अपनी लिस्ट को इससे और भी बढ़ाना चाहते तो बढ़ा सकते हैं. विच ऑफ दिस आर मूविंग, विच आर द रेस्ट. ओके, हाउ डिड यू डिसाइड वेयर एन ऑब्जेक्ट इज इन मूविंग और द रेस्ट. द माइट हैव अ नोटिस दैट द bird not be a same place after some time while the table is at the same place. On this basis, you may have decided whether the object at the rest or in motion. Let us look at the motion of ant closely कि ये मोशन के अंदर कैसे एंट के अंदर किस तरह का मोशन होता है, तो आप क्लोजली देखेंगे एक्टिविटी 6. Select a place where you find ants. Spread a large sheet of white paper on the ground and keep the little sugar on it. Ants are likely to be attracted to the sugar. You will find many ants crawling on the sheet of paper soon. For any one ant, try to make a small mark with a pencil near the position when it just have crawled onto the sheet of the paper. Keep marking its position after a few seconds as it moving along the sheet of the paper. After some time, shake the paper free of the sugar and the ants. Connect the different points you have marked the arrow to show the direction in which the ant was moving. Each point you have marked show where as the moving to in interval a few second. कि आपने देखा होगा कि जो एंट जो है वो एक फ्यू इंटरवल्स के बाद में यानी थोड़े टाइम के बाद में उसी पॉइंट पे पहुंच जाती है जहाँ पे उसको शुगर जो है वो मिलती हैं.
Motion seems to be some kind of a change in a position of an object with time, isn't it? In activity 5, where did you place object like a clock, sewing machine, of or an electric fans in your grouping object? Are these objects moving from one place to other? No. Do you notice movement of any other their parts? The blade of fans or the hands of a clock? हाउ आर दे मूविंग, कि ये सब कैसे घूमते हैं? इज देयर मूवमेंट सिमिलर टू दैट एंट और द ट्रेन, कि इनके मूवमेंट जो है वो ट्रेन और एंट के जैसी होती हैं, फैन और इनकी. लेट अस नाउ लुक एट सम टाइप ऑफ मोशन इन हेल्प अंडरस्टैंड these differences. Now 10.8 type of motion. You may have observed the motion of a vehicle on a straight road, march past of a soldier in a parade, the falling of a stone. What kind of motion in this? Sprinter in a 10-meter race also move along a straight track. Can you think the more such, for example, your surrounding? कि आप इसके अलावा भी रेक्टिलाइनर जो मोशन है उसके एग्जाम्पल्स आप अपनी डेली लाइफ के दे सकते हैं. In all these examples, we see that the object move along a straight line. This type of motion is called rectilinear motion. के इस तरह का मोशन जो क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? रेक्टिलाइनर मोशन. एक्टिविटी 7. टेक अ स्टोन, टाइट अ thread to it and write it with your hand. Observe the motion of the stone. We see that the stone move along a circular path. In this motion, the distance of the stone from your hands remain the same. This type of motion is called सर्कुलर मोशन, कि एक सर्कल के अंदर कंटिन्यूसली मोशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन. और ये जो फिगर 10.13 के अंदर दे रखे हैं सारे ही किसके एग्जाम्पल हैं? सर्कुलर मोशन के. द मोशन ऑफ द पॉइंट मार्क ऑन द ब्लेड ऑन इलेक्ट्रिक फैन or the hand of a clock, for example, circular motion. The electric fan or the clock by themselves are not moving from one place to another, but the blade of the fan rotate, and so do hands of a clock. If we mark a point anywhere on the blade of the fan, on the hands of the clock, the distance of the point from center for the fan, the clock will remain the same. They rotate, कि क्लॉक जो है वो जैसे 12 से चल के वापस अगेन रोटेट होके वो 12 पे ही आ जाती है, तो ये रोटेटरी मोशन होता है. ओके, और फिक्स टाइम में आती है तो उसको हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं. इन सम केस द ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स टाइम आफ्टर सम टाइम. दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. ओके, take the stone tied with a string that you used in activity 7. Now hold the string in your hand and let the stone hug from it. This is pendulum. Pull the stone to the one side with the other hand and let it go. Now the pendulum is in motion. It is an example of periodic motion. A branch of a tree moving to fro. Motion of a child on a sewing string of a guitar, or the membrane of the drums or tabla being played are all example of periodic motion, where an object or part of a repeated its motion after fixed interval of time. Did you observe the sewing machine as a part of activity 5? You must have observed that remains at the same location while any point on its wheels move with a circular motion. It also has a needle that moves up and down continuously as long as the wheel rotates, isn't it? The needle is undergoing periodic motion. Have you observed closely the motion of the ball along the ground here? Here the ball is rolling on the ground, rotating as well as moving forward along the ground. Thus, the ball undergoes the rectilinear motion as well as rotational motion. Can you think of other example where object undergo combination of a different type of motion? When did many measurement activity and discuss some kind of motion, we show the motion is a change in the position of an object with time.
The change in this position can be determined through distance measurement. This allows us to know how fast slow or motion is. The movement of a snail on a ground, a butterfly flying from flower to flower, a river flowing, an aeroplane flying, moon going around the moon going around the earth, and blood flowing inside our bodies show that there is a motion everywhere around us. ओके कि हमारे आसपास में सबकी सारी ऑब्जेक्ट और सारी थिंग्स के अंदर मोस्टली मोशन होता है. ओके स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है और आपको होमवर्क के अंदर क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 और 10 जो है वो आपको होमवर्क में करना है. स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन के आंसर्स की जो PDF है वो आपको इस वीडियो के साथ में मिल जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉइंग. हैव अ गुड डे. टेक केयर. बाय बाय.